टेक क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट है. वी विल सॉल्व इन टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. You will understand why I am saying part 1 and part 2. Question number 12. A company produces a component which passes through two processes. During the month of April, materials for 40,000 components were put into process 1, of which 30,000 were completed and transferred to process 2. Those not transferred to process 2 were 100% complete as to materials cost and 50% complete as to labor and overheads cost. The process 1 cost incurred were as follows: direct material 15,000, direct wages 18,000, factory overheads 12,000. Of those which are transferred to process 2, 28,000 units were completed and transferred to finished goods stores. There was a normal loss with no salvage value of 200 units in process 2. There were 1800 units remain unfinished in the process, with 100% complete as to material and 25% complete as regards to wages and overheads. No further process material cost occur after introduction at the first process until the end of second process, when protective packing is applied to completed components. The process and packing cost incurred at the end of process 2 were: packing material 4,000, direct wages 3,500, factory overheads 4,500. You are required to prepare statement of equivalent production, cost per unit, and process 1 account. And second part, prepare statement of equivalent production, cost per unit, and process 2 account. Okay, what is the obvious new thing in this question? दो प्रोसेस अकाउंट हमको बनाना है. दैट इज नॉट न्यू. हमने तो पहले क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर हमने तीन तीन प्रोसेस अकाउंट बनाए. विथ वर्क इन प्रोग्रेस हम ऐसा दोनों प्रोसेस का इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है. Okay, I will divide the question into two parts. Whatever is given on page number 56, that is part 1 related to process 1. तो जब आप process 1 कर रहे हो तब नीचे process 2 का तो पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है. Then we will come to process 2 and then we will read or we will consider this information. So first we will consider process 1 only and we will first prepare process 1 account. उसका statement of equivalent production, उसका cost per equivalent unit and cost apportionment. Actually is very simple because ये question में, if you have read it very carefully, there is no opening work in progress. Today only we did one question where there was no opening work in progress. Chalo, first we will prepare process 1 से related or first we will prepare process 1 format. It's very small question. इसमें एक important point है जो हमको discuss करना है. Prepare this. You can prepare both formats together. If you want process 1 account, उसी के नीचे you need to prepare statement of equivalent production. चलो, let us start. Very simple. बोलो, is there any opening work in progress? No, तो नहीं लिखने का. During the month of April, materials for 40,000 components were put into process 1. Write down debit side. 2 units introduced. $40,000 components है, so we will write 40,000. अमाउंट कॉलम में डैश डाल दो. चलो, कंटिन्यू विद द डेबिट साइड. टू डायरेक्ट मटेरियल 15,000. राइट नाउ वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट प्रोसेस 1. कंटिन्यू विद डेबिट साइड. राइट डाउन 2 डायरेक्ट वेजेस. अमाउंट इज 18,000. and then finally 2 factory overheads. Amount is 12,000. Stay on page number 56 and check करो process 1 में is there any normal loss.
process 1 में is there any normal loss? No. How many units were completed and transferred to process 2? 30,000. It is given 30,000 were completed and transferred to process 2. So write down on credit side by process 2. $30,000 and leave 1 or 2 lines and then write down by closing work in progress. ये बाकी का 10,000 पूरे का पूरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कैसे पता चला? It is given those which are not transferred to process 2. So how many units are completed and transferred to process 2? 30,000. So those which are not completed means how many units? 10,000 are 100% complete regarding material and 50% complete regarding labor and overhead. So this is saying that this is what? Closing work in progress. So यहाँ पे लिखो by closing work in progress. Of course right now we know this is even simple than the first question of this type we have solved. मतलब इसमें सिर्फ closing work in progress है, we don't have even opening work in progress. Quantity column tally करो. Quantity column will tally at 40,000. Continue. We will now go to statement of equivalent production. ये सब fair part में पूछा है वो लोग ने. They have asked process account in fair part. They have asked us statement of equivalent production in fair part. So cost per equivalent unit भी fair में करेंगे and cost apportionment भी हम लोग fair में ही करेंगे. There is no working here. चलो, now we will start with statement of equivalent production. Normal, usual statement of equivalent production that we have prepared. यहाँ पे actually factory overhead लिखना चाहिए. यहाँ पे direct wages and यहाँ पे direct materials. Okay. Direct wages. Start. बैठो मत. Continue. Follow. How will you start this working note? Now so many times we have, or rather how will you start this statement? Expected output. Usual manner में you will start. Today only did one question where there was no opening work in progress. Same presentation, हम लोग कोई change नहीं कर रहे. We are maintaining consistency. हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट नहीं करने का. चलो, एक्सपेक्टेड आउटपुट बोलो. व्हाट प्लस व्हाट माइनस व्हाट? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस विच इज 0 प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस 40,000 माइनस नॉर्मल लॉस विच इज ऑल्सो 0. So expected output is 40,000. Transfer to process 2. उसमें लिखो A. Again we are still following which method? FIFO. This is last question. Next question में we will follow weighted average method. 3 question हम लोग weighted average method के करेंगे. Opening work in progress. Zero. So entire category is units introduced and completed. How many units are transferred to process 2? 30,000. So bracket में calculation आएगा 30,000 minus nil. That is 30,000. Next, point number 2, closing work in progress. In fact, we don't have abnormal loss as well as abnormal gain. Closing work in progress 10,000. Total will tally with expected output 40,000.
Next column is percentage completion in current month. Opening work in progress नहीं है तो percentage completion will also not be there. Units introduced and completed, percentage of completion always 100%. Next, closing work in progress, percentage of completion is given in the question 100%, 50%, 50%. We can calculate equivalent units. Opening work in progress, equivalent units will be 0, of course. Go for cost per equivalent unit if you have completed this, because next calculation is cost per equivalent unit. Very much routine calculation. We have 3 cost. For direct materials, what is the numerator? 15,000 divided by 0.375. For direct wages, numerator is 18,000, denominator is 35,000. I think this will be in decimals. 0.4286, and last one is 12,000 divided by 35,000. 0.342857. 1.2321. Let us proceed. Continue with the next one, statement of apportionment of cost. So this question is very easy as far as the first part is concerned, because here only we are supposed to prepare process 1 account, and in process 1 account we don't even have opening work in progress. There are only 2 categories. Transfer to process 2. First is opening work in progress. Even if it is not there, you should write it. Opening work in progress 0B. Units introduced and completed. $30,000 into 1 point.
what is amount? $36,964. Second one will be closing work in progress. Closing work in progress valuation will be done for each cost, और every cost का calculation separately होगा. Direct materials, direct wages and factory overheads. 10,000, 5,000, 5,000. $0.375, 0.514286, and 0.342857. Give me total of closing work in progress. 80. नहीं, you have to round off to 36. नहीं तो process account tally नहीं होगा. But internally also you have to round off properly. This is surely how much? 3750. What is this calculation? 5,000 into 0.514286. 257. ओके, और यहाँ पे कितना था? 1714. यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. 2752. एनीवेयर यू हैव टू राउंड ऑफ 1 रुपये एक्स्ट्रा, अदरवाइज प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होगा. प्रोसेस अकाउंट में 1 भी रुपये का डिफरेंस नहीं आना चाहिए. $36,964 and 8036. हाँ यस, मेरे साइड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन एंजॉय योर लाइफ, इट इज़ योर एज. हम लोग को तो क्या लेक्चर लेना ही पड़ता है, कमाना पड़ता है ना हम लोग को घर के लिए. चलो लेट अस स्टार्ट विथ प्रोसेस 2, अकाउंट इन द सेम क्वेश्चन. वी विल गो फॉर्मेट टू फॉर्मेट, पूरा एक साथ मत बनाओ. यू स्टार्ट विथ प्रोसेस 2. चलो let us start with process 2.
listen carefully to my question. First of all, process 2 का details or whatever details are there for process 2 are given on next page. So come to this page where we have details for process 2. Listen to the question very carefully. जो मैं पूछ रहा हूँ, do we have opening work in progress in process 2? Very good. Do we have opening work in progress in process 2? Those who are saying yes, मैंने पहले ही ब्रेक का ऑप्शन दिया था. Do you have opening work in progress? तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ. ये रेलवे अनाउंसमेंट नहीं है कि होते ही रहेगा. Do we have opening work in progress in process 2? No. We don't have opening work in progress in process 2. चलो आगे बढ़ते हैं. How many units? First of all, process 2 को units कहाँ से मिला? In fact, in this question we have also prepared process 1. You can go to process 1. Credit side पे लिखा हम लोग ने by process 2. This will come on the debit side. So write down to process 1. How many units? 30,000. And we have 36,964. इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे P1 materials. Okay, now my next question. Is process 2 further introducing any materials? No, क्योंकि वो लोग ने लिखा भी है no further process material cost occur after introduction at the first process until the end of the second process. मतलब second process वाला मतलब process 2 वाला क्या कर रहा है, जो process 1 से मिला उसका लेबर उसी पे काम कर रहा है, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स ऐड नहीं कर रहे हैं. देन ऑल्सो ये टेबल में तुमको 3 कॉस्ट दिया हुआ है, विच इज द फर्स्ट वन पैकिंग मटेरियल, विच इज द सेकंड वन direct wages, and which is the last one factory overheads. Okay, but I will change the order a bit. I will first write direct wages. So write down 2 direct wages. Direct wages is 3,500. Then I got 2 factory overheads 4,500, and then I will finally write 2 packing materials 4,000. Okay, now check the question and tell me क्या प्रोसेस 2 के अंदर नॉर्मल लॉस है. यस, नॉर्मल लॉस कितना है? 200 यूनिट्स विथ हाउ मच स्क्रैप वैल्यू? नो स्क्रैप वैल्यू. ओके, सो क्रेडिट में लिखो बाय नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी इज 200. Do we have process 3 or is process 2 the last process? Last process. There is clearly written 1800 remain. Sorry, उसके पहले लिखा है 28,000 units were completed and transferred to finished stock. So write down by finished stock. $28,000. And then we have by closing work in progress, because closing work in progress information is also given, that is 1800. Check karo, is units column telling? Units column is telling at 30,000. Okay, now listen to my question very carefully. You can see, of course, normal loss में scrap value is 0 यहाँ पे, तो put a dash. Now you can see there are 2 categories जिसका amount missing है. We are actually going to find out these or amounts of these 2, मतलब cost है actually. So can you tell me, हम लोग 3 step perform करेंगे, वो हमको सबको पता है. What is the first step?
statement of equivalent production. What will be the format of statement of equivalent production? सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स यूनिट्स, ये मेरी तरफ से रखो. बोलो आगे. परसेंटेज कंप्लीशन इन द करंट मंथ. Do you remember last time we had concluded कि percentage completion in the current month and वो last वाला equivalent units, उसके अंदर हम कितने कॉलम बनाएंगे, जितने कॉस्ट हैं उतने कॉलम हम बनाएंगे. आई थिंक वी हैड कंक्लूडेड दिस. ओके, सो नाउ कैन यू टेल मी, ये प्रोसेस में, प्रोसेस 2 में अगर मुझे वो दोनों कैटेगरी का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज फिनिश्ड स्टॉक, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ मेनी कॉलम्स आई शुड प्रिपेयर इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. और आगे जाके हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे. तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट भी हम कितने कॉस्ट के कैलकुलेट करेंगे, मतलब इससे आगे कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली मैं वो पूछना चाहता हूं. कौन सा कॉलम्स हम लोग बनाएंगे इन परसेंटेज कंप्लीशन इन करंट मंथ? वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, पैकिंग मटेरियल, ये 3 बनाएंगे. मतलब प्रोसेस 1 P1 मटेरियल का कॉलम ही नहीं बनाएंगे. तो लास्ट लेक्चर का जो भी डिस्कशन किया, गला फाड़ फाड़ के, मैं तो गला भी बैठ गया मेरा, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो याद ही नहीं है. तो दैट मीन्स ये P1 मटेरियल का कॉस्ट यू विल नॉट लाइक टू गिव इट टू द कैटेगरीज विच आर ऑन द क्रेडिट साइड. P1 मटेरियल का कॉलम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ऑब्वियसली वो तो बनाएंगे, उसमें तो डिस्कशन ही नहीं है. अभी भी आज ही हम लोग ने क्वेश्चन किया जिसमें हम लोग ने प्रोसेस 2 का क्वेश्चन किया था, उसके अंदर P1 मटेरियल का कॉलम बनाया तो था. तो एक तो P1 मटेरियल बनेगा, P1 मटेरियल का कॉलम बनेगा. नेक्स्ट से सच्ची बोलो, इतना सब डिस्कशन करने से अच्छा 3 कॉलम तो फिक्स है. कौन सा 3 कॉलम फिक्स्ड है? P1 मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. डिस्कशन सिर्फ किसके ऊपर है? पैकिंग मटेरियल. तो पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट का कॉलम बनाने का कि नहीं बनाने का? क्यों नहीं बनाने का? पैकिंग मटेरियल का जो कॉस्ट है, डू यू रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर? व्हाट आर वी डूइंग इन दिस चैप्टर? कि ये डेबिट साइड पे जो कॉस्ट है ना, वो हम किसको अपोर्शन कर रहे हैं? क्रेडिट साइड पे जो आइटम्स है उसको हम अपोर्शन कर रहे हैं. डू यू एग्री विद दिस? अगर मैंने ये चारों का कॉलम बनाया तो चारों का इक्विवेलेंट यूनिट्स मिलेगा. चारों का इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोग कहां पे यूज करेंगे? नीचे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे. Yes or no? But the question is, are you going to apportion packing material to closing work in progress? No. Packing material cannot be apportioned to closing work in progress. वो closing work in progress अभी तक work in progress है, उस पे काम थोड़ी खत्म हुआ है. पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट जो है वो पूरे का पूरा कॉस्ट किसको जाएगा? एंड इनफैक्ट क्वेश्चन में दिया है, प्रोटेक्टिव पैकिंग इज अप्लाइड टू completed components. yes or no? मतलब पैकिंग मटेरियल को राइट नाउ भूल जाओ, फॉरगेट पैकिंग मटेरियल एंड सॉल्व द क्वेश्चन नॉर्मली. तो अगर मैं पैकिंग मटेरियल को साइड पे रखता हूं तो कैन यू नाउ टेल मी हाउ मेनी कॉलम्स वी विल प्रिपेयर अंडर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन परसेंटेज कंप्लीशन इन द करंट मंथ? 3 कॉलम्स. कौन सा 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग? P1 मटेरियल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, P1 मटेरियल तो बनेगा ही. नेक्स्ट कौन सा कॉलम बनेगा? डायरेक्ट वेजेस. और उसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो ये कॉलम्स तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है. पैकिंग मटेरियल को साइड पर रखो, फिर नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करो. फिर लास्ट वर्किंग नोट में जब तुम कॉस्ट अपोर्शनमेंट करोगे, कॉस्ट अपोर्शनमेंट में जो ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक का कॉस्ट आएगा उसके अंदर पूरे का पूरा 4000 हमको ऐसे ही ऐड कर देना पड़ेगा. Do you agree with this? This I can prove it from cost sheet format also. Go to cost sheet format. पेज नंबर 15 पे है cost sheet format. सॉरी, पेज नंबर 13 पे है, आई थिंक सो 11, और पीछे 11 में आ जाओ. See this in cost sheet format. I can prove it from cost sheet format also. If you see, प्राइमरी पैकिंग जो है वो ऊपर यहां पे नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर. पैकिंग मटेरियल का जो कॉस्ट है
वो लोग ने वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे रखा है। अंडरस्टैंड वन रूल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का रूल यह है कि उसके ऊपर के जो कॉस्ट हैं वो उसके वैल्यूएशन में इंक्लूड होते हैं। प्लेसिंग ऑफ स्टॉक डिटरमाइंस इट्स वैल्यूएशन। आई रिपीट, प्लेसिंग ऑफ स्टॉक डिटरमाइंस इट्स वैल्यूएशन। पूरे कॉस्ट शीट में 3 स्टॉक हैं। वी हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वी हैव स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड वी हैव स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस का जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है ना, वो यहां पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इसके ऊपर के जो कॉस्ट है ना वो ही सिर्फ उसके वैल्यूएशन में इंक्लूड होंगे। और उसके ऊपर 2 ही ऐसे कॉस्ट हैं, विच आर द ओनली 2 कॉस्ट विच विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एक है उसका परचेस का कॉस्ट एंड प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो उसके वैल्यूएशन में इंक्लूड होंगे। देन हम लोग ने कॉस्ट शीट में फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया था। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, प्लेसिंग देखो, प्लेसिंग फिनिश गुड्स का प्लेसिंग यहां पे, इफ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू वैल्यू फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके ऊपर जितने भी कॉस्ट है ना वो उसके वैल्यूएशन में इंक्लूड होंगे। दिस इज इवन ट्रू इन अकाउंट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कौन से अकाउंट में आता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट के जितने भी कॉस्ट है ना वो उसके वैल्यूएशन में नहीं जाते। दोस कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक of finished goods are called as, in this subject, product cost. They are called as which cost? What are product cost? Product costs are simple those costs which are included in the valuation of stock. और क्लोजिंग स्टॉक के नीचे जो कॉस्ट आते हैं उसको हम लोग ये सब्जेक्ट में बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। They are called as which cost? Period cost. What is meaning of period cost? Period cost are those costs which are completely written off in the period in which they are incurred. मतलब P&L account debit side के जो भी cost हैं they are called as which cost? Period cost. See whether you understand my next statement. अगर तुमने किसी cost को closing stock के value में include किया तो वो cost will get carried forward to the next accounting period along with closing stock. Closing stock को तुम किस पे वैल्यू करते हो? कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower. एनआरवी छोड़ो, दिख साइड पर को एनआरवी ज्यादा ही रहता है। जनरली एक्सेप्शनल सिचुएशन में एनआरवी कम हो जाएगा, बट जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट? कॉस्ट। विच कॉस्ट? Which cost? हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। Which cost? I answer this question. Closing stock of finished goods is valued at what? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो काउंट करके बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन से कॉस्ट आते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डायरेक्ट एम्प्लॉय, नंबर 4 फैक्ट्री ओवरहेड्स, करेक्ट है नहीं? नंबर 5 ये सब भूल जाओ, क्वालिटी कंट्रोल अगर रहेगा तो ठीक है, बट राइट नाउ डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। नंबर 5 ये आया, 5 कॉस्ट आए। सपोज ये पांचों कॉस्ट का टोटली से फॉर एग्जांपल 400 रुपीज, मतलब तुम्हारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी है मल्टीप्लाई में 400 होगा, मतलब उतना कॉस्ट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड अलॉन्ग विथ क्लोजिंग स्टॉक। उतना कॉस्ट विल रिमेन अनएक्सपायर्ड। उतना कॉस्ट रिमेन्स व्हाट? अनएक्सपायर्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपायर्ड? एक्सपायर्ड मतलब ये पीरियड में खर्चा हुआ, यही पीरियड में वो एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट पीरियड में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तुमने कभी बचपन में सुना रहेगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कभी सुना है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस तुम लोग बोलते थे प्रीपेड इंश्योरेंस। ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है वो प्रीपेड है ना, तुमने ज्यादा बनाया मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, अब तुम उसको नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक का प्लेसिंग डिटरमाइंस इट्स वैल्यूएशन एंड दैट इज ट्रू फॉर वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो। वर्क इन प्रोग्रेस में इतने सारे सम में हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कर रहे हैं। वी आर डूइंग वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 12th क्वेश्चन चल रहा है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में सिर्फ तीन ही कॉस्ट इंक्लूड हो रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि वही तीन कॉस्ट तो उसके ऊपर हैं। एंड लॉजिकली ऑल्सो यू कैनॉट इंक्लूड पैकिंग कॉस्ट इन द वैल्यूएशन, मतलब पैकिंग कॉस्ट को तुम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको थोड़ी पैकिंग कॉस्ट अप्लाई करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई मैंने बोला ये सबका प्लेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। डोंट से पैकिंग कॉस्ट को मैं ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में इंक्लूड हो जाएगा, जो गलत है। चलो नाउ अगर इधर तक है तो अब नॉर्मल तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Statement of equivalent production, now we are preparing. सपोज प्रोसेस 2 अगर खुद का मटेरियल उसमें ऐड करता तो 4 कॉलम आते, P1 material, then process 2 का direct material and so on. We have seen that in today's only one question, first question that we solved in today's lecture. Now solve this in normal or usual manner. Let us start. Expected output, नो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी प्रोसेस में कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस 30,000 बट दिस टाइम वी हैव नॉर्मल लॉस 200, so this is 28,800, sorry 29,800. Then we have transfer to finished stock. Again I am following the same format, opening work in progress. Then point number B, units introduced and completed. In this process also units introduced and completed, पूरे का पूरा units introduced and completed ही है, because transfer to finished stock, how many units are transferred to finished stock? 28,000. Nothing is work in progress, so entire 28,000 falls in this category. Second one is closing work in progress, 1200, sorry 1800.
Closing work in progress is 1800. $29,800. This tallies with expected output. Closing work in progress percentage of completion is given in the question. %100 complete to materials and 25% complete as to wages and overheads. Multiply this 28,000 for units introduced and completed. For closing work in progress, we have 1800, sheet 450. $29,800 and 28,450. Next working note we know is, or next calculation, everything is not in working note this time, it is cost per equivalent unit. तो बनाओ cost per equivalent unit का table. Cost per equivalent unit calculation again in usual manner we are doing. Of course, here also we will not calculate cost per equivalent unit for packing materials. Check your calculations. Here some answers you should get respectively.
Just check, is this correct? 1.520598. वन पॉइंट ये बराबर है भाई 936,964 divided by 29,800. Is this correct? Just check. I am doubt अब मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स का डाउट है. 1.521598. 1.52. Is this correct? चलो, statement showing cost apportionment. डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट करेक्ट है क्या? चलो कंटिन्यू. करेक्ट. 1.521598. नाउ ये वर्किंग नोट में देयर इज वन पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर. Transfer to finished stock. First do all the calculation normally. There is no opening work in progress, still we are writing it. Units introduced and completed. $28,000 into 1.521598. You get 42,060. Just check, is this correct? 42,605. देखो, अगर तुमने ये अमाउंट प्रोसेस कॉस्टिंग के क्रेडिट साइड पे लिखा ना, तो तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरे का पूरा विच कॉस्ट वी विल ऐड, पैकिंग मटेरियल्स, एंटायर कॉस्ट विल गो एज इट इज टू द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक. $46,405. So whatever units are transferred to finished stock, $605. Second one will be closing work in progress. Do valuation of closing work in progress. P1 materials, direct wages and factory overheads.
कितना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल? बोलो, व्हाट इज द टोटल ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? हाउ मच? 2359. जैसे भी राउंड ऑफ करो टैली होना चाहिए. 2359. So now you can see it is tallying at 48,964. Sure, that is end of this question. Of course, this new point was packing materials.